Oh, welcome to the stream. Yo, welcome to the stream, everybody. Welcome, welcome, welcome. आ जाओ सारे भाई, सारे आ जाओ। फिर लगाते हैं ब्लेडिंग। Yo, 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 yo. Welcome, everybody. Fix it. Cloud G, Virendra, Sasang. As usual, people. Welcome, everybody. ये सेटअप, ये लॉन्ग किसी ने लिया था? ये लॉन्ग किसी ने लिया था? बढ़िया सेटअप था। चलो, अब तो वो रहा नहीं है। Hello, 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 hello. Hello, everybody. Trump speaking, yeah, that's a volatility. That is why the volatility is there. That is why the volatility is there. बढ़िया भाई, परफेक्ट ट्रेड था वैसे। 15 मिनट जैसे इन्वर्स हुआ इधर भी ले सकते हैं, और 5 मिनट भी इन्वर्स जैसे हुआ when market inverse this closed about, that was your long, guys. If anybody wanted to take that trade, taking that long means stop below this 47 point, and you could have taken this 128 points move to the upside. The volatility in gold. NQ, I think NQ and ES are doing better. Can we trade Apex ka while? Yes, yes, you can. You can trade Apex while Trump is speaking. It's not a red folder news. Is this called IFVG setup? Yes, it is called IFVG setup. Oh, I took it on one of my account, not all of them. Again, because I don't take that setup normally. I made $1,589 on that. So yeah, that was good. I mean, Trump, it doesn't matter. You can trade on Apex. Apex allows you to do it. Don't worry about that. And the event has passed, so it's like 8:30. He supposed to start talking, right? So red folder meaning NFP, CPI, those kind of move. He's gonna keep speaking. So I mean that doesn't count. Yes, he is about to pull out $100,000 in a month. So yeah. बहुत बहुत डिफिकल्ट था भाई ट्रेडिंग रॉक्स 15 मिलियन ईयर्स अगो तब ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स नहीं थी तो मुझे खुद का पैसा लगाना पड़ता था बट यू नो राइट टकला हो रहा हूँ मैं धीरे धीरे राइस से बैंक में कभी बैंक पूछती नहीं है मैंने बहुत सारे निकाले आज तक मैंने को पूछा नहीं है
यस आईसीटी कॉन्सेप्ट विच इज ऑन यूट्यूब. ओके हाई निकल चुका है गाइस, हाई निकल चुका है. वी हैव 4 minutes still open. Why I have to and okay nice. uh, I am guessing today with this momentum कि हम ये गैप फिल करें ऊपर वाली, but for me to go long I need pullback, a small intermediate liquidity sweep ऐसी वाली, and then we can take long. If we are continuing short then again cannot do anything. भाई प्लीज टीचिंग स्टार्ट करो ना, मैंने स्टार्ट करके अब खत्म करने वाला हूँ मैं. आई बीन टीचिंग स्टूडेंट्स सिंस लास्ट 2 years. I just breached my only account. Again, you broke the rule of trading before 9:30. I mean, if it was in your setup and then you lost your account in your setup, then it's alright. But if you break any rules and then blow the accounts, then it's not like that. Are you taking batches? Not anymore. I'll think about it, guys. I'll think about it. I'm not saying no. But by blue lines, highs and lows. Lows, highs. अभी नहीं कर सकते, अभी मार्केट ओपन वॉल्यूम आएगा, खत्म हो जाओगे. हाई टाइम फ्रेम डेली बायस टू द अपसाइड. मेरे को ले लो, बाद में बंद कर लो. I'll try गाइस. मैं कुछ कुछ लिया करूंगा जो वेरी सीरियस है. 2 4 2 4 2 4, बट वो मुझे नहीं चाहिए कि 15 20 लोग. आई एम टीचिंग राइट नाउ ऑन दिस लाइव. No, I don't use opening price as levels. Let's see guys, open. Let's see open. I am serious about what? I don't see your previous message. Gujarat right now. Alright, I think can we take some lows out and then start pumping back up again? I would love that. Taking those setups would be nice. Yes, I know. No, I don't have goal. I have goal of trying to take my 2 shots at the market if market presents its setups. That's all I do. तुम वही चीज़ है, तुम गोल पे ज़्यादा फोकस करते हो सारे, कि पे आउट निकालना है, और जब रूल्स फॉलो की बात आती है तब तुम कुछ नहीं कर पाते. आई थिंक दिस वॉज द इन्वर्जन क्लोज. ओके 1 minute नहीं हुआ है, 1 minute में कोई एफपीजी नहीं थी, 2 minute में थी. दैट वॉज द क्लोज एंड लेट्स सी इफ वी कैन टेक दिस लो आउट and move some money around. We have taken out that low, we have swapped that low. ऑन एवरेज तुम गिनने जाओगे तो सारे ट्रेड गिन के तो बहुत सारे ट्रेड हो जाएंगे. evals funded, but serious trade, let's say max 10. Price action is not working. How do you know? Did you try it for 2 3 years working on it everything? ऐसे 1 2 महीने में नहीं बता सकते तुम कि कुछ काम कर रहा है नहीं कर रहा है आपके लिए. गाइस बी वेरी केयरफुल. ओके if I want to take a shot, I want some good FEGs to get inverse, right?
which is this gonna be this 5 minute is perfect for me to inverse, but on lower time frame I want a structure as well. Mhm. If I want to short this 5 minute inversion, I will have to enter with less quantity on 3 minute. I'll see. Even if this 3 minute get inverse, right? Let's see. We don't see, sir. Even ES is not pulling back, guys. I'm not willing to take shots just yet. I want a confirmation. Otherwise, we are bullish. If you see, for now, we are pulling back into 15-minute FEG. So we can get respected and then start pumping back again. So one setup can be that we retrace as much as we want, come back, close above, we take entry here for new highs, right, on the left side. Or if you want to go take some shots out first, then it's a different story. अरे वो रिव्यू में पड़ी है सूर्य, रिव्यू में पड़ी है वो चीज़, देख लें. अरे यार, no, we haven't inversed 3 minute yet. It's all good, guys, for now. Okay, can we push through this 15-minute FPG tab to the upside now? Oh, don't want to confuse myself with too many things, right? Keeping it simple as usual. If we inverse this FPG, potential liquidity area can be this area, right? This and this lows. London high is there, London low is there. अभी वो निकाला नहीं गया था, which is like 23. बट मैं लॉन्ग का बायस इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि just because of course we do have that daily open gap from so many days ago, बट उसके ऊपर ये भी है कि इधर भी गैप है, दोनों साइड गैप से. तो which gap do we hit first? I'm watching both 3 minute and 1 minute. आह, अब मार्केट वापस से चौपी हो गया. यस, अच्छी तरह से दिखा तो रहा है कि इट वांट्स टू गो डाउन. यस, स्ट्रक्चर तो ऐसा बना है उसने थोड़ा सा लो टाइम फ्रेम में. I do want market to invest this 1 minute for me to go short. But yeah, thumbnail जैसे बाल है ना आज. Alright, we got 10 second or whatever is left. 3 minute high time frame inversion. चलो वो नहीं हुआ. नाइस. वही चीज़ें फिर कंफ्यूज हो जाता मैं. स्टॉप है, वेट करते हैं, डायरेक्शन पकड़े. हमने एक बंदे ने बना के नेक्स्ट नेक्स्ट कहाँ गया, नेक्स्ट है. हाँ वही है साला, खुद का थंबनेल बोल रहा है.
Okay, guys, if this 1 minute inverse, I think we do have a shot at uh 40 points का stop होगा somewhere around that. इवन थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, बट इन्वर्जन चाहिए विद द मोमेंटम एंड एवरीथिंग. स्ट्रक्चर तो है, देखो स्ट्रक्चर तो है डाउन साइड का. बट बैरली कोई कुछ करेगा तो मुझे lucid flex has no consistency. If you pass that account, it has no if I want to take long, I'll take long. मुझे पता है ये delayed long होगा, बट इसके ऊपर ही लेना चाहूंगा मैं. ब्रेक इवन भी जल्दी डालना पड़ेगा. Soon, yes, soon. Bro, how do you feel like you have teased Abhi and he might close 100K a month? What do you mean by that? Of course, feeling good. What is even that question? He can close 500,000 as well if he wants. ऐसे वीक्स नहीं चाहिए यार मार्केट में. दो एफपीजी के बीच में फंस चुका है. पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो प्लान अपना सिंपल है. इसके नीचे शॉर्ट, इसके ऊपर लॉन्ग. देखते हैं. ओके. We do have this FEG to short on. If we want to do it, then we can target this low. Probably stop loss will be in control. But वही एक equation है. Yeah, you can wait for 15-minute inversion as well. But then वही चीज़ है. नाइस. अगर ये इन्वर्स करी जाती है, ये 1 मिनट की स्टॉप गाइस बनेगा, अच्छा खासा बनेगा. तो माइक्रो से एंटर होना. ओके, डोंट फक अराउंड. Probably 3, 2, 1 and I'm going short, guys. Short on here. My stop is just above 46 point ka. Let's see if we can get the follow through today. 185. आज भी चॉप कर गया तो भाई गाइस आई एम डन फॉर भाई इस मार्केट से. एंड 86. We'll have to
see about break even and stuff after this. After this, I think I'll have to trail if we do go there. डेली टारगेट कुछ भी हो सकता है आपका, टारगेट ही मत रखो, मैं तो बोल रहा हूँ. I want the flaws to these lows. If we can get that, would be nice. Oh, no, 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 no. Nah, we are not getting that follow through, guys. Today, even today. And I'm about to get stopped out. And yeah, there we go. Two back to back bad days, guys. It's just chopping around. Probably we'll see what I can do around. Not my days. Horrible week. Okay, I'm gonna keep it on chart. 40, 43, 45. Market is just not doing it, following through. Everything is insane. Look at ES. ES is already back up again. We'll have to play some bias probabilities into this game once. I think it's gonna keep doing it until we feel this gap above us or below us. I think probably chop is the only answer for market right now. We have inverse this. If I remove this, we have inverse this bearish FPG. But again, confidence is very low for me today. Just not doing it for me. Yeah, now it's running away. I think we're gonna invest this. Probably this will come into the play. Not doing it, guys. Not doing it. Now, will it break out or we gonna keep doing this shit? Should we go, I mean, like that, or we gonna come back down, go back up, come back down, go back up? Gonna keep, if it's gonna keep doing this shit, no point. Let me just check one thing quick. Nope. No industry, I mean, no
instrument that I watch has moved that greatly. Everything was done in the New York, what? Sorry, not New York. Just before New York session opened, and now maybe we are into the job. I don't know because we are stuck into the gaps. I think in between gaps, if you see on the high time frame, it is very hard to predict where market will go, and it's not like it's not moving. It is moving very aggressively, but it is very hard to predict the market, and it is moving greatly in one direction when it is not New York session. So New York AM session has been the shittiest. If you see this and this, we are stuck between two opens, which are like gapped up or gapped down, both. uh New York AM session has been choppy, I guess, a lot. Now again there will be one setup. I am willing to take that setup if we close strong above this again, but not with the risk, same risk again. Not worth it. Nice. If you are profiting in this market, you are legendary. Until unless you are just buying on random things. With my setup, it is very hard right now. Not getting the value and the momentum. Even yesterday, yesterday whole day was shitty. We did get the downside momentum later on, but even that was unpredictable. I don't know. If we close above this again, I'm willing to take a long there. Other than that, I don't think so. For me, there will be any setup. But I'm gonna take very less risk as I again 45 जो points का loss था वो it has ended up damaging my accounts. I don't wanna take more damage. So if we close above here, I'm gonna take long. That's the only try I'm gonna do for today, and then maybe switch to other accounts if I can. 4 3 2 1. Yeah, guys, I'm gonna try this long with a very tight risk. I know probably will get stopped out, but again, there was the plan. Close below this short, open again, close above that, a long. Uh, will probably break even before this. Hopefully it works out, guys. Hopefully this works out. Otherwise, my accounts are gonna be close to blowing out, and I'll have to pass new ones. It's always a painful stuff. I'll do break even after we tap these highs, guys. Come on. That was the only push, guys. That was the only push. If we tap that high, go break even, guys. We have tapped that guy. I'm gonna go break even and wait for 1 and exit everything if I can. Come on, continue push. Uh
Will it take us out? 37. Come on, pump back up, please. Give me something. In last 2 days, you have been shittiest. Nice. Can we tap that 67? Perfect. I just love that. One SL, one TP, guys. We have recovered some bit of drawdown today. Come on, yeah. That was a fake out. This was fucking shit trade, but yeah, this was good trade. Worked out. Again, I'm still down little bit on the day, but again, it feels good to get one TP in the bank. Done. So we took two trades. I don't know, it was somewhere around here, 40, 43 point, and then this one. Wow, and we're gonna run. If anybody held that trade, they recovered the first trade. Again, इसमें SL कम था तो वही चीज़ है. I went with the same position size which I went in this one, just because risk ज़्यादा नहीं कर सकता था मैं. I only trade one firm at one time. वही चीज़ है. Again, I think long was the play today. Short again. ये जो ड्रॉप हुआ ना डिस्प्लेसमेंट के साथ, ये क्लोज हुआ, उसने फेक आउट कर दिया. मुझे लगा विल गेट द फॉलो थ्रू, टेक आउट दिस लो एटलीस्ट, वी गोना डू दैट, बट इट फक्ड अस. And once we invalidated that move, I think this was the move today. Let's just keep it here, guys. I don't want to play around with the market too much. If I find any trade later on, maybe I'll see if I can come back green today. But two trades on these accounts, I'm not touching it. Already they are close to blowing out. I want to recover them, get to the payout. Which is it? But yeah, same position size in both. So 41, 20, 30, down 10 point something. All right, questions, guys. Now, अब क्वेश्चन पूछ लो जिन्होंने ऊपर पूछा था. Sorry, was busy trading. Even though I'm if I if I look like I'm happy, I'm not. But it's just that whole week has been tough. So getting that one win gives me the confidence to take another trades tomorrow. Not pushing out of my setup. ये भी सेटअप था, ये भी सेटअप था, दोनों सेटअप थे. ये पहले बन जाता, ये क्लोज नहीं करता प्रोबेबली, तो हम ये ट्रेड लेते ही नहीं. राइट. बस वही चीज़ है. How much should I risk per trade in funded accounts? Also tell for eval. For eval, $750. If you know your setup works, okay. If there is big if, okay, then $750. If you are profitable on paper, if you are not, just go back, trade, get to that level where you feel you confident to trade. $750 in evals. That is my personal opinion. कोई कुछ भी बोल सकता है, but my personal opinion, best gonna work out for you is like $750 risk on evals and 450 to $450 risk on the funded accounts. How to pass eval for a newbie in futures? सेम सेटअप लगाओ जो आपका जो भी फॉरेक्स में लगाते थे, वही चीज़ है. सेम रिस्क. स्केलिंग का मतलब ही यही है कि तुम ट्रेड करो उसको एक अकाउंट की तरह, and you make more money by just copy trading. I risk around $500 to $600, around 50K.
I just look at the high time frames like highs and lows. Gunther, Gold, whatever is her name. I cannot pronounce it, but हाँ नहीं कल का कहाँ भाई, आज भी अभी भी लॉस में ही बैठा हूँ मैं। बट ये प्रॉब्लली ट्रेड बढ़िया था, इसको छोड़ देना था, बट वही वो क्लिक टीपी वाला साउंड आता चाहिए ना, उसके लिए बढ़िया है भाई, जो भी है बढ़िया है। Start with again 2 accounts only, JSR trades. Only 1 account, maybe not even 2. Try to pass them individually if you have multiple accounts, and try to get them to pay out, right? See, what happens is lots of people do mistakes on that. They come up with 1 account savings, they trade that account, they blow that account, and then they wait for 3 months. इससे better तुम 3-4 accounts की saving करके आओ पहले से, तो वो कंटिन्यूस मोमेंटम के साथ एक आधा अकाउंट तो पे आउट तक पहुंच जाएगा, अगर आपको सिस्टम पता है तो। भाई ये थी ना ट्रेड, ये थी ना ट्रेड छोड़ने वाली। 1:1 पे ब्रेक इवन डाल देते, बट नहीं, वो कल डाल देंगे, कल जो करना है करेंगे। आज वो टीपी बड़ी होना बड़ी जरूरी था, मोस्ट इम्पोर्टेंट था। आर वी गोइंग टू दैट हाइस? नो, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ लॉन्ग्स एट ऑल। वो मिस, अगर तुम्हें लॉन्ग होल्ड करना ही था तो ये ट्रेड होल्ड करना था, राइट? बट लुक एट दिस शिट, अनदर 60 पॉइंट्स। बिकॉज नहीं करना है मुझे अकाउंट उड़ाने का शौक नहीं है। हाई टाइम फ्रेम में बायस क्या, लोस और हाइस मार्क करके रखो, एक लो से दूसरे हाई तक जाएगा, दूसरे हाई से दूसरे लो तक जाएगा, बस वही बायस होती है। मार्केट जैसे बनाती है, जो तुम लोअर टाइम फ्रेम में करते हो वो हाई टाइम फ्रेम में करो, सेम चीज़ है, बायस तो क्या ही। अगेन ये कैंडल क्लोज क्यों करी भाई, अगर उसको नहीं जाना था तो। इवन इसकी भी क्लोज कर दी, इसकी भी क्लोज कर दी, वरना एक बढ़िया सेटअप मिल जाता बाद में। इंस्टेंट फंडेड में तुम नहीं, उसका 50% उसमें रूल्स अलग है। सो इन 50 के अकाउंट्स इफ यू मेक $3,000 यू कैन विड्रॉ $2,000 इंस्टेंट फंडेड में। तो लेट्स सेम चीज 100K के लिए और 150K के लिए। 150K में तुम 3,000 बना विड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कुछ सीन है। Oh, I again, to be transparent, okay. Yesterday I was in drawdown in Lucid accounts after taking that loss, and then I completely destroyed those accounts, right? So I straight away purchased 150K's funded eval, not instant funded eval उठाए मैंने। कल 4500 बनाए थे, आज फिर से 4500 बनाए सुबह। आई मीन वो फंडेड ईवाल्स में तो चलो जस्ट बिफोर न्यूयॉर्क सेशन जो मैं ट्रेड बता रहा था, and I am currently funded with 150K's on Lucid 5 accounts, and I took this both trade on those accounts, this one and this one, and थोड़े ट्रेडिफाई के हैं जो क्लोज है ब्लो करने के लिए, उनको रिकवर करने का ट्राई कर रहा हूँ। बट बेस्ट सेटअप मेरा यही है, मैं यही करता हूँ हर बार, इन्वर्जन खेलता हूँ। अरे उनकी वेबसाइट पे सब कुछ है सिद्धार्थ, और इफ़ यू वांट डिटेल्स ज्वाइन माय डिस्कॉर्ड, उसमें होगा सारी डिटेल्स। खाया नहीं हुआ, मेरा दिमाग फट जाएगा। अरे कल मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ, ओके। मैं पहले से अकाउंट में $600 डाउन था, और कल जो लॉस हुआ उसकी वजह से और 750 कुछ डॉलर डाउन था। अब पूरा अकाउंट फ्लो ही हो चुका था, तो मैंने सोचा आई ट्राई टू रिकवर दिस, क्योंकि अब मुझे पे आउट बनाने के लिए ये रिकवर करना पड़ेगा और उसके बाद पे आउट लेना पड़ेगा।
मैं इसको लिंक कर रहा हूँ। तो टोटल मुझे लेट्स से $1500 का तो मैं मिनिमम निकालता हूँ, 3000 प्लस ये दोनों निकालना पड़ेगा, राइट। तो मैंने बोला आई एम गोना ट्राई टू रिकवर इट। मेरे स्टेज पे तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे स्टेज पे बिल्कुल नहीं कर सकते तुम। मैंने पहले भी बोल के रखा है कि आई डू टेक पे आउट्स ऑफन, क्वाइट ऑफन, बिकॉज मैंने रिसेंटली, तुमने देखा होगा, $7000 का पे आउट लिया था लूसिड से। सो नाउ व्हाट माई थॉट प्रोसेस behind that is like I can spend $2000 something like that from that payout to make it to another payout, right? तो वही चीज़ कि I want to speed up that process of taking payouts, so drawdown में तो कोई मतलब ही नहीं। So I did find one setup yesterday which did not work out क्योंकि पूरे दिन चौप रहा। So in the end I ended up purchasing 150 के evals, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे पास किए। देखो मैं लिंक पेस्ट कर देता हूँ पहले। वो इस मैंने प्योर गैम्बलिंग की है। मैंने एक बायस डिसाइड कर ली कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, फिर मैं इधर 2 कॉन्ट्रैक्ट डालता हूँ, जैसे ही पुल बैक करता है 2 और डालता हूँ, 2 और डालता हूँ, एंड देन अगेन पंप पे पास हो गए। दैट्स व्हाट आई डिड बिकॉज आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड टुडे, sorry, yesterday, and again I couldn't stop myself, which you should not ever do, क्योंकि 99% चांसेस है तुम ब्लो कर दोगे वहाँ पे अकाउंट। अगर तुम्हारे पास है कि $6000 $7000 का बफर है, and then you are purchasing one what 40 80 50 60 डॉलर का अकाउंट एंड तुम उसमें कर रहे हो, then it is justified, just because I was frustrated। वो फ्रस्ट्रेशन निकालनी, वरना वो इधर आ जाती है आज के लिए, तो मैंने कल निकाल दी और आज फिर पास कर लिया एंड उसमें हो गए भाई। जस्ट डोंट आस्क, प्योर गैम्बलिंग, पर प्योर गैम्बलिंग। मैं बता रहा हूँ ना, कहाँ गई, देखो मुझे फ़ोटो निकालने दो, आई डू हैव फोटो ऑफ दैट। मैंने तुम्हें दिखाने के लिए, नहीं यार, फ़ोटो मिल जाए ना, फ़ोटो मिल नहीं रही। ये रही, रुको पहले मुझे इधर, लुक एट दिस। मैं फंडेड में बिल्कुल नहीं करता, बाय द वे दिस इज ओनली इवाल्स। लुक एट दिस शिट, डू यू सी दिस? नीचे जाने वाली है, एंटर हुआ, एवरेज किया, एक ड्रॉप पे सेल कर दिया। सेम चीज़ इधर वापिस से घुसा, एक ड्रॉप पे सेल किया। दैट्स हाउ आई मेड मनी ऑन माई इवाल यस्टरडे। वंस इन अ वाइल्ड केस है ये, बढ़िया। बट वो बायस तुम्हें डिसाइड करनी पड़ेगी। मकड़ी का जाला बना गया था भाई, उससे भी घटिया लग रहा है भाई। नथिंग, एब्सोल्युटली प्योर गैम्बलिंग। और सबसे खतरनाक ये, अगर तुम एक्सपीरियंस नहीं हो और वो काम कर गई तुम्हारे लिए एक बार, तो फिर तुम खत्म हो। एक बार तुम वो चीज़ काम कर गई, फिर तो तुम खत्म हो, क्योंकि फिर तुम्हें ऑलवेज याद रहेगा, क्योंकि तुम इन एक्सपीरियंस हो, तुम्हें पता नहीं कि दैट वाज फ्लूक ऑफ पासिंग। यू नॉट गोना एक्सेप्ट, यू गोना थिंक है मैंने भाई मेरे टैलेंट से पास किया है, ये सब नहीं, दैट वाज ओनली लक। एंड देन यू गोना रिमेंबर दैट एवरी टाइम ड्रॉ डाउन में हो गए, मैंने उस दिन रिकवर कर लिया था, मैं आज कर लेता हूँ ऐसे ही करके। तो वो कंट्रोल रखना ज़रूरी है। फंडेड्स में एब्सोल्युटली नथिंग, pure discipline. And when you are unexperienced, when you have less than 1 year of experience in trading, right, with one setup or one thing or one platform, or I don't know, one type of trading, you should not do that in eval as well. After 2 3 years of experience, maybe you have so much money in your bank account that it doesn't make shit difference, that $1000 ऐसे ही चले जाए, then you can do it.
अब नाउ ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि आई एम एबल टू मेक दिस टाइप ऑफ मनी जस्ट बिकॉज आई डू दैट, आई डू दिस टाइप ऑफ शिट। नहीं, मैंने पहले बनाए है डिसिप्लिन से, वरना वो तो पूरा एक सर्कल हो गया। वो टेस्ट करती है। फंड नेक्स्ट फ्यूचर अच्छी है, अच्छी है, बट अगेन आई एम नॉट ट्रेडिंग विद देम राइट नाउ। जो फंडिंग टिक्स ने किया उसके बाद से मुझे वही सीन है। जो मैंने इवाल्स में किया, अब मैं वो सोचता हूँ कि वो चीज़ अभी इधर फंडेड में कर दूंगा तो मेरा $15,000 का पे आउट लॉक हो जाएगा, है ना। वो हो नहीं सकता। फंडेड में आते ही तुमको मार्केट लगा देगी। वो मुझे पता है क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। बस उनको नहीं करना था फंडिंग टिक्स, क्योंकि उनको बिजनेस नहीं करना था, वो अनप्रॉफिटेबल थे, बंद कर दिया। बेटर डिसीजन फॉर देम रग पुल करने से। एफटीटी ने किया, उससे बढ़िया तो ये था ना। गाइस लाइक दबा दो यार, ऑनेस्टी के नाम पे। लूसिड बढ़िया है पटेल भाई। लूसिड, ट्रेडिफाई और टॉप स्टेप, सारे बढ़िया फॉर्म है। भाई अभिनव को मैंने ट्रेड करते हुए देखा है। वो ऐसे ऐसे नहीं कि खुद से ट्रेड करता है, वो साहिल और वो सारे बैठ के ट्रेड करते हैं, 2-3 लोग। तो वही हम मैंने देखा है लाइव, वो कैसे पैसे बनाता है, क्रेजी ट्रेड्स भाई। बट वो सीखने के लिए उसको लगे 2 साल। इट टुक हिम 2 years। सो आई थिंक उसने 1 साल पूरे टॉप स्टेप पे बहुत, आई थिंक 1.5-2 लाख रुपए उड़ाए थे, आई थिंक इफ आई नो। एंड देन दिसंबर 2024 में मैं और साहिल बैठे थे, तब उदय और अभिनव आए थे आई थिंक पूछने के अकाउंट कैसे पास होते हैं, टॉप स्टेप के अकाउंट कैसे पास होते हैं, बिकॉज दे यूज्ड टू ट्रेड विद डॉजी एंड ऑल, पीबी पीबी ट्रेडिंग। बट वो साले ऐसे फेक करते कि भाई चलो इधर ट्रेड लिया नहीं लिया, वो सारी चीज़, राइट। जो भी था नहीं हो रहा था। फिर हमने बताया कि ज़्यादा रिस्क करके ट्राई करो, बट फिर भी सेटअप में इश्यूज थे, वो सब ब्ला 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 जो भी था। फिर मार्च अप्रैल के लेट, थोड़ा लेट वो ज्वाइन हुए हमारे साथ। और फिर मैं उसको वही बोलता गया कि तू कुछ भी हो, तेरे सेटअप पे ट्रस्ट कर और कॉन्ट्रैक्ट्स डालेगा, कोई टेंशन नहीं। उसने 4 महीने भाई बहुत कम पैसे बनाए अभिनव ने। आ, बहुत कम पैसे बनाए, लाइक रेयरली पे आउट्स आते थे। बट व्हेन वंस ही अंडरस्टूड कि क्या बोल रहा था मैं, क्यों बोल रहा था, एंड देन उसने खुद का एक सेटअप मेरे सेटअप के अराउंड बनाया। एंड देन नाउ ही इज अबाउट टू क्लोज $100,000 मंथ। वही चीज़ है, 6-7 महीने मेरे साथ रहने का फायदा, प्लस उसका खुद का दिमाग, उसकी खुद की मेहनत। अरे खाना आया नहीं ना अभी। आई एम रीचिंग 2 years, मेरा टर्न आएगा फॉर श्योर फॉर श्योर। अगर इफ यू आर वर्किंग टूवर्ड्स same thing for more than 2 to 3 years, I don't think so you there is possibility that you won't see a success। वो 5 साल का होता है वो पीरियड, बट मैं तो 3 साल में ही बता रहा हूँ। 3 साल में तुम्हें दिख जाएगा कि आ रहा है, थोड़े थोड़े धीरे धीरे सक्सेस आ रहा है। टू क्लोज 100K, ब्रो वी गॉट, नो यू डोंट नीड हाई रिस्क और बाय ग्रीन डे एवरी डे। यू डोंट नीड, यू नीड 20 एपेक्स अकाउंट्स, 2 पे आउट्स, एंड तुम हो गया 100K। भाई वो उसका पर्सनल है चीज, फिक्स इट, क्यों पूछ रहे हो वो चीज।
नहीं, उनके जैसा नहीं है सागर। इट्स वेरी डिफरेंट। लूसीड हैज टोटली डिफरेंट प्लान्स। He trades negative, positive, everything combined. Once you start seeing that you are on the break-even stage, plus you understand everything, थॉमस, कि तुम्हें पता लग रहा है कि तुम सही चीज कर रहे हो, चलो वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तुम्हें ऐसा सेंस हो जाए कि चलो मैं आई एम गोइंग डूइंग राइट थिंग्स, कभी कभी मेरे इट्स थिंग्स आर गोइंग इन माई डायरेक्शन, कभी कभी नहीं हो रहे, बट इन द नेट यू आर getting something, right? Let's say if you are blowing 10 accounts but you are getting 2 to 3 payouts in between those. So now that stage is when you know that you can come, I mean, become profitable trader, because now after that it is all about fixing mistakes कि वो 10 accounts क्यों blow रहे हैं, उनको 8 कैसे लेके आओ, 10 blown to 8 account, to 5 accounts, to 3 accounts, you know, that's how you know that you are going into the right direction. Just look at 1 month older you. Have you fixed anything? If you are fixing stuff slowly and steadily, then yes. हाँ तो वो गंतर भाई चले जाएंगे भाई, वो तो कुछ कर नहीं सकते ना, ट्रेडिंग है ही रिस्क लेने का काम। हाँ फंडिंग टिक्स भाई, तुम डिस्काउंट देखो, $45 का कौन अकाउंट देता है, समझ रहे हो? प्लस 6 अकाउंट्स, रूल्स आर इजी टू टेक पे आउट, वही चीज़ है। टू ट्रेड्स मैन इन वन अकाउंट, आइदर आई एम मैं बहुत डाउन होगा उस दिन, और मे भी थोड़ा सा ब्रेक इन होगा, और पहला टीपी हो गया तो बढ़िया रहेगा, वही चीज़ है, आइदर 3 केस हो गए। हाँ यू कैन स्कैल्प 30 सेकेंड ट्रेड्स। सी, इफ़ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, इफ़ यू हैव बीन ट्रेडिंग फॉर वाइल एंड सेटअप तुम्हें बढ़िया से सब कुछ पता है, तो लो रिस्क करने का कोई मतलब नहीं बनता मार्केट में, सच बता रहा हूँ, लो रिस्क करने का कोई मतलब नहीं बनता। चलिए तुझे टिप्स, तू तू भाई बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडर है भाई, क्रेजी वाला ट्रेडर है तू। हाउ डू यू डिटरमाइन बायस? भाई मुझे बायस के ऊपर वीडियो बनानी पड़ेगी, वरना लोग मार डालेंगे। मैं हाइस एंड लोस मार्क करता हूँ, और फिर हाई टाइम फ्रेम एफटीजीएस के अराउंड बायस मार्क करता हूँ गाइस। चिल मारो यार। यस आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। भाई शशांक, आई बीन टीचिंग स्टूडेंट्स सिंस लास्ट 2 years। आई थिंक आपने मुझे अभी फाइंड आउट किया है। करिए करिए, मीटअप करिए। मैं एक दिन आऊँगा और उधर बोल दूंगा कि स्टोरी में भाई आ जाओ, तो तब आ जाना, ओके? मैं इस वीकेंड कुछ करता हूँ। वो प्लान आउट वाला वीकेंड वो नहीं होगा सीन।
Do you have any other entry techniques apart from inversion? I have lots of sting, but I'm using right now IFPG. ओके देन आई बीन टीचिंग स्टूडेंट था भाई। तुम मेरी लाइव स्ट्रीम के पेज पे जाओ, तुम देखो कब से मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ। अहमदाबाद अहमदाबाद भाई, आज जा रहे भाई। आज हमें ना, आज ये गैप फील हो रही है। अगर कोई लॉन्ग की एंट्री मिल जाए ना बढ़िया सी, कोई स्वीप करके, इसको स्वीप करके फिर इन्वेस्ट करके हमें कोई लॉन्ग का सेटअप मिल जाए, बढ़िया रहेगा। अरे सूरत थी क्या हो તમે सूरत थी क्या हो આટલા લાંબા તીલ મારો. I do have session with one-on-one guys, so one-on-one students at 10 o'clock. So I'll have to start stream early, guys. Okay, और 9 o'clock तक हूँ, फिर हम बंद करते हैं। दोनों ट्रेड आज हो गई, एक डेढ़ घंटे में, एक घंटे में ही। एक फेक आउट, एक वन वॉज गुड ट्रेड। I am going to do some research on letting my trades go for after one jam one is to one to more, and वही चीज़ है कि I'm doing little things here and there to find out improvements दिखेगी। अभी भी रिसेंटली ट्रांसफर हुआ हूँ मैं नेगेटिव से इवन 1:1 पे, थोड़ा पॉजिटिव में भी जाएंगे 1:2 1:3, बट वो डेटा के साथ जाएंगे कि लॉन्गर टर्म पीरियड में कौन सा काम करता है, राइट। मोस्टली एसएल जाता है तो कुछ गलत कर रहे हो। थोड़ा सा 10 पॉइंट डाउन हूँ मैं, $100 $120 फ्रेम। I'm down 120 something. Two, three, four. पता नहीं जल्लियो, तू बता दे तब कर लेंगे। अरे यार fuck, I almost forgot. हिरेन भाई इधर डिस्कॉर्ड में बैठे हैं। My is 25. I turned 25 this December, last December. हिरेन भाई से शाउट आउट भाई, हिरेन भाई शाउट आउट दे देना कभी टाइम मिले तो, डालेगा। यस आई नो दैट 1:2 ब्रेक इवन ज़्यादा देता है, बट वही डेटा लेना है कि 1:2 टारगेट कर रहे हैं तो इन दी एंड जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं ब्रेक इवन के साथ, और जब टेपी हो रहा है तब विच वन इज बेटर फॉर एवरीथिंग इज बेटर एज लॉन्ग एज इट वर्क्स फॉर यू। फॉर मी राइट नाउ आईसीटी कॉन्सेप्ट। रेंजिंग मार्केट में तो भाई स्कैल्पिंग ही बढ़िया है, रेंजिंग मार्केट में स्कैल्पिंग बढ़िया है। जो मैंने सेटअप बनाया था ब्लॉक्स के ऊपर नेगेटिव आरआर का,
उसका एक एक सेटअप ये बनता है कि ये ब्लॉक जो मार्केट इधर क्लोज किया है तब ये टैप कर दे, टैप नहीं किया है बट हाँ मेरा काम है सेटअप बनाना, आपका काम है फॉलो करना और प्रॉफिटेबल होना। आर्यन को देख लो, अभिनव को देख लो, साहिल को देख लो और फिर फेमस होना और फिर मुझे शाउट आउट देना। क्योंकि मैं बायस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता। चंद आतिश भाई, for me if market is, this is 9:30 opening, right? If it wants to follow through it can take out this low at least, I can get a break even at least. I sweep हुआ है guys, we are slowly and steadily coming back down, but कोई FEGs नहीं है तो इन्वर्जन इसका ही लेना पड़ेगा तुमको अगर if you are finding out trades. For me if we sweep this, right, for me if we sweep this and then inverse this then I would go long. If we keep the structure after sweep inversing this FPG, sweeping this, if we keep the bearish momentum I would go for the short, but I would target the 50% of the range, right, where the target has to be is like if I put need a Fibonacci, the target can be somewhere around here 22 235, right. If I take if I'm taking short somewhere around here, let's say I will absolutely get out or see, at least be careful around this area. बट वो हो नहीं रहा तो वी वॉन्ट फोर्स इट, इट्स नॉट हैपनिंग राइट नाउ तो वी वॉन्ट फोर्स इट, राइट, वी आर जस्ट watching. Let's see if market present itself with the new opportunity, we'll try to take it. जस्ट नास 100 सर्च मार लो, मेरे चार्ट के जैसा सेम होगा, नास 100 on the trading view, and if you want to trade with it or do something like that trading or whatever then अकाउंट परचेज कर लो, वो हो जाएगा बिना डिलेड का डेटा। ट्रेडिंग व्यू पे उसको कनेक्ट कर लो इधर से, ये रहा ट्रेड वेट, इधर डाल के कनेक्ट कर लो। If you are just practicing or whatever, just you don't wanna waste your money, just search नास 100, ये वाला देखो सेम चार्ट है, US 100 नास 100 जो भी सर्च करना हो मिल जाएगा आपको। Too many levels on my chart is looking ugly, gonna remove some stuff. I'm in longs from 330, target is 404. Okay, hopefully it gets it, probably it's gonna do it. No, if it's in my time duration, let's say 9:30 to 11:30 के बीच में, और वो मुझे IFG दे रहा है अच्छी वाली और मुझे लग रहा है मार्केट वहाँ जाएगी, मैं ट्रेड ले लूँगा। उसके बाद थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है बट हाँ तब तक तो कुछ नहीं। और गाइस 5 मिनट until we end the stream.
कर देंगे इस वीक, बोल तो रहा हूँ, बोला तो था। When shopping, probably, I guess that's the only time if I can find out somehow that it's shopping, I'm not gonna take trades. What is the overall win percentage, excluding when you're if we exclude that, right? Probably it's gonna be landing around 65 to 70, 72, 73, maybe sometimes stretch it. It's I'm talking about 3 years of data, 3, 4 years of data. I've had months, 2, 3 months straight where I haven't lost single trade. I had months where I am just getting break evens. I had months where I'm down little bit. Which is it? 10 a.m. PO3. Again, I do not use that, guys. Do not ask me the thing I don't know about. Sorry. Oh, it's getting cramped here. Are you doing one-on-one mentorship? I'm doing one right now, but in future I don't know if I will or not. Wait, you have low confidence, Atish. Then trust in yourself. Whatever you are doing, it's all right. Do not change anything. Do not ask for validation from people. Why do you wanna do that? For beginner, top step always. उनका प्लेटफॉर्म इश्यू है इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस लो है उनमें मेरे बट ऑलवेज दे गोना पे यू दैट्स व्हाट मैटर्स मोस्ट कैन वी कनेक्ट ऑन डिस्कॉर्ड यस मे बी इन फ्यूचर विल सी दैट्स ऑल आई कैन से wow we are going for that 471 level are my comments invisible I can see your comments what did you do what is your average RR 1:1 that's all I target try to target. Alright guys, 1 minute left. Today was bit tough day as well. Second trade को हम run करने देते तो हो जाता probably आज. But it's all about confidence that I did not have. Okay, I'll see you guys tomorrow. Thank you for joining. Hopefully you did not blow any accounts. I'll see you guys tomorrow as usual. We'll see. Try to find one good trade. We haven't gotten that trade in last 2 days. It has been tough. But yeah, Monday was good, so again we are keeping it balanced right here, right? So yes, I'll see you guys. Hopefully last 2 days will go better, Thursday and Friday. That's what we hope for. uh I will see you tomorrow. That's all. If you blow accounts, if you have blown accounts today, buy Lucid. They are trustable, everything is good with them right now, and they are not going anywhere until 6 to 8 months. That's all I can say. So yeah, you can use code GCT. That will be very helpful to the channel and everything. Make sure to subscribe and like so I can come back tomorrow with the confidence. Okay, I'll see you guys tomorrow. Thank you with the same energy, hopefully. Bye bye, take care.